अच्छा, यहाँ पे थिंकर्स की क्वालिटी होती है, आप बहुत डिटेल से ना भी जाएं तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा। यानी अगर आपको हाब्स लॉग रूसो की फिलॉसफी का इशू नहीं भी है तो इट वुड वर्क आउट, वो चल जाएगा। कहना नहीं, मेरे ख्याल में सवाल आखिर में लेंगे, बिकॉज हमारी पॉलिसी है सवाल आखिर में लेने वाली। सो लेट्स टेक दैट आउट, लेट्स फॉलो दैट पॉलिसी। ओके, वो वैसे एक जनरली बात की थी उसमें। ओके जी, थैंक यू। आप लोगों ने शेयर किया इनकी डेट ऑफ बर्थ और डेथ 1748 से लेकर 1832। यस, आई रिमेंबर दैट। नेम आउट ऑफ स्क्रीन, Atif didn't get it. अच्छा, बोर्ड इज आउट ऑफ साइट। ओह सॉरी, ऊपर लिख दिया मैंने, ऊपर लिख दिया, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं ठीक करता हूँ। सॉरी सॉरी, मेरी गलती। ये ठीक नहीं, फिर भी ऊपर है। जेरेमी बेंथम, अब ठीक है। ओके, 1748 to 1832, बस अब ठीक है। आई गेस अब ये आपको विजिबल होगा। थैंक यू आतिफ फॉर पॉइंटिंग आउट। बेंथम का सवाल अक्सर आता है जी, बड़ा आसान सवाल है। इसको थ्योरीज की बहुत आसान थ्योरीज में से एक है। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन है बट मोस्टली इट्स द इजीएस्ट ऑफ द थ्योरीज। अगर आप मुझसे पूछे तो सबसे आसान थ्योरी, प्लेटो से भी ज़्यादा आसान मैं इसको समझता हूँ, बट आइडिया समझिएगा, बाकी फिलॉसफी आसान है। लेट्स स्टार्ट विद द बायोग्राफी। बायोग्राफी से शुरू करते हैं, फिर हम उस पर ऊपर आएंगे। Bentham was born in England, इंग्लैंड में पैदा हुए in 1748. He belonged to a rich family, he belonged to a well-off family. His father was an attorney, उसके father जो थे वो lawyer थे और attorney थे. Therefore, from the beginning, he had a very conducive environment for study, logic. लॉजिक पे बात होती थी, एनलाइटनमेंट पे बात होती थी, रीजनिंग पे बात होती थी, लॉ पे बात होती थी। बिकॉज लॉ को हम कहते हैं लॉ इज द प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन रैशनैलिटी। लॉ जो है वो फेथ का नाम ही नहीं है, लॉ तो नाम ही है, इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन रैशनैलिटी। हम जब अपनी ज़रूरत के तहत डिसीजन लेते हैं, समझदारी अपनी विजडम को यूज करते हुए लेते हैं, उसको हम लॉ कहते हैं। सो his father was a lawyer, and as a lawyer he had obviously been supportive of the enlightenment, rationality, wisdom, etc., etc. So Bentham from the very beginning had a very keen interest in the study of philosophy and in general studies. To be very honest, अगर आप उसकी बायोग्राफी पढ़ेंगे तो आपको उसकी बायोग्राफी में नजर आएगा कि how Bentham was more into the Greeks, the Latins, और उसने at age around 7 years की एज तक he had studied the Greek philosophers, he had studied the even Latin thinkers. So Latin को, Greek को, वो literature को पढ़ चुका था even at the age less than 10 years. So बहुत एक studious किस्म की उसकी upbringing थी. Anyhow, he got then enrolled in law school. Later on उसने law में graduation की, just like family tradition. And after doing his graduation in law, Bentham started working as a lawyer, as a lawman. Practice की उन्होंने थोड़े time के लिए, but soon he realized that practicing of law is not the suitable job for him. Financially well off था, he didn't need the money to earn, he was just doing it for the sake of family name कि जी सारे वकील हैं तो मैं भी law को practice करता हूँ. But he soon realized that his intellectual mind is unfit for the traditional practice of the law. And therefore, he quit the practice of law and then spent his entire life reading and writing, as well as providing policy inputs for the law for different states. अब ये जुमला सबसे इंपॉर्टेंट था, मैं इस जुमले को रिपीट करता हूँ. He quit the job and he spent almost all of his life in writing, in studying, and in proposing the law making process
लॉ मेकिंग प्रोसेस फॉर डिफरेंट स्टेट्स इन यूरोप एंड अमेरिका। उन मुल्कों को सजेस्ट करता रहा कि आप लॉ के हवाले से थ्योरी ऑफ पनिशमेंट भी है, प्रिजन की थ्योरी है, लॉ मेकिंग की थ्योरी है। ही स्टार्टेड प्रपोजिंग पॉलिसी मेकिंग रिगार्डिंग लॉज। he was trying to help them in the philosophy of lawmaking, in the philosophy of judicial processes and philosophy of lawmaking processes. आसान तरीन लफ्जों में उन मुल्कों को बताया कि लॉ होता क्या है और लॉ बनाते कैसे हैं और लॉ की फिलॉसफी क्या है। ही यूज्ड टू एक्चुअली कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स दैट। तो उसकी हम थ्योरी को शॉर्ट लफ्जों में कह सकते हैं, हिज फिलॉसफी is political but it is more legal than it is political, but legal thing is always political, उससे relate करती है। So his philosophy is legal political philosophy, purely political नहीं है, purely legal नहीं है, legal political philosophy है बेंथम की, जिसके अंदर उसने मोस्टली कंट्रीब्यूट किया। जो ऑब्वियसली ही रोट डिफरेंट बुक्स थी, डिफरेंट किताबें हैं उसकी, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट किताब है जिसके अंदर से हम थ्योरी पढ़ेंगे, उस बुक का नाम है, लिखिएगा अपने पास, an introduction to the principles of morals and legislation. I repeat, an introduction to the principles of morals and legislation. कोई बंदा यहां पे टाइप भी बेशक कर दीजिएगा। It's a simple theory that he explained, और इस theory के नाम से जाहिर है, thank you इकरा, introduction to the principles of morals and legislation. This is simply, I guess, self-explanatory है, how he wanted to introduce the principles that should correlate morality with legislation. उनके relationship में legislation के हवाले से उसके principles क्या होंगे। This is the subject of his book, जो ये book है, yes CSS book का नाम है। और इसी बुक में से, ये एक किताब नहीं लिखी उसने, बहुत सी लिखी, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक, और इसी किताब की एक फिलॉसफी है जिसको हम अभी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। दैट्स ट्रू, हम ना, ही ट्राई टू अंडरस्टूड मोरालिटी इन स्टेट क्राफ्ट, काइंड ऑफ स्टेट क्राफ्ट के अंदर भी, पर्टिकुलरली लेजिस्लेशन के अंदर, एग्जेक्टिव डोमेन के अंदर नहीं बल्कि लेजिस्लेशन की डोमेन के अंदर उसने डिस्कस किया। सो दिस इज द बेसिक बायोग्राफी जी बेंथम की। अमीर आदमी था, घर में बैठ के खाना पीना उसे मिल रहा था और बैठ के किताबें लिखता रहा, फिलॉसफी पढ़ता रहा और स्टेट को सजेस्ट करता रहा, ये भी करें और ये भी करें। ही यूज्ड टू गिव देम द पॉलिसी इनपुट्स। सिंपल सी लाइफ है, बाप भी लॉयर था और खुद भी लॉयर था, ये बेसिक आइडिया। मैं पहले बता चुका हूँ कायनात के बायोग्राफी नहीं लिखनी होती है, बायोग्राफी नहीं लिखनी होती, बायोग्राफी जस्ट आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ। लेट्स सी उस पर सवाल क्या आता है, सवाल किस तरह से आता है। बहुत सी थ्योरीज हैं, आप में से किसी लोगों ने अगर पढ़ी हो तो उसकी थ्योरी ऑफ पनिशमेंट भी है, बेंथम की थ्योरी ऑफ लॉ भी है, बहुत सारी चीजें आती हैं। लेकिन जो हम पढ़ेंगे और जो मोस्टली सवाल बेंथम का आता है, क्योंकि जिस थ्योरी की वजह से बेंथम इज नोन टू बी बेंथम, वो थ्योरी है थ्योरी ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म। इज थ्योरी ऑफ हाँ दानियाल, एग्जैक्टली, यूटिलिटेरियनिज्म इज अ थ्योरी जिस पे सवाल आता है। सो द एग्जामिनर कैन आस्क यू क्वेश्चन, एनालाइज, एवेल्युएट, डिस्कस बेंथम्स थ्योरी ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म। दैट्स द मोस्ट लाइकली एंगल। एक दूसरा वे भी है जिसपे वो सवाल पूछ सकता है, देयर कैन बी अनदर वे, एंड दैट इज द थ्योरी ऑफ Bentham's theory of pain and pleasure. Pain and pleasure. I don't know, Aman, I don't know what you study in economics, so I'm not so sure about that. Pain and pleasure की theory. Pain and pleasure की theory भी है जो आप पढ़ते हैं इसकी। ये क्रिमिनोलॉजी में है theory, I'm not so sure about that. पेन एंड प्लेजर थ्योरी। अच्छा, इस पे एक और भी टर्म यूज कर सकता है। चलिए, अगर आप वो बेंथम की थ्योरी पढ़ी है आप लोगों ने, क्रिमिनोलॉजी में पढ़ी हुई है बेंथम की थ्योरी? पढ़ी नहीं है, अभी पढ़ेंगे। अच्छा, लास्ट है जी जो टर्म यूज होते हैं लीस्ट लाइकली, बट एक फ्रेज आ सकता है लीस्ट लाइकली, और वो है
the greatest happiness of the greatest numbers. Greatest happiness of greatest numbers. आसान लफ्जों में ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर्स, ये फ्रेज है जो एसोसिएट किया जाता है बेंथम के साथ। तो वो भी सवाल पूछा था, इस फ्रेज को लिखकर कह सकता है एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। तो ये इस तरह की 3 टर्म यूज हो सकती है। मोस्ट लाइकली इज दिस वन, लेस लाइकली इज दिस वन, एंड लीस्ट लाइकली इज द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस। बट टर्म कोई भी यूज हो, आंसर सेम होगा। कंटेंट ऑफ द आंसर विल बी सेम। ऑब्वियसली उसकी आप नरेशन चेंज कर देंगे, स्ट्रक्चर चेंज कर देंगे, बट मेन आइडिया वही रहेगा, थ्योरी ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म। उसी के अंदर पेन प्लेयर की थ्योरी आती है, उसी के अंदर ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर्स आता है। इट्स द सेम थिंग। ये नाम समझ आ रहा है, यूटिलिटेरियनिज्म, पेन एंड प्लेयर, और साथ में ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर्स। ये 3 तरह की वर्डिंग करके सवाल आ सकता है। इज इट क्लियर? ओके, लेट्स सी, लेट्स नाउ मूव, चलते हैं कॉन्टेक्स्ट के ऊपर। उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द रीजन व्हाई। जी अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। वी हैव टू सी व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द थ्योरी। उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर में यूटिलिटेरिज्म, अभी तो पूरी थ्योरी पढ़ रही है कायनात, 20 नंबर की थ्योरी है, पूरी थ्योरी पढ़ रही है। अभी तो सिर्फ कॉन्टेक्स्ट देखेंगे कि उसने ये थ्योरी क्यों दी। लेकिन थोड़ा सा आपको आइडिया नहीं हो जाएगा, पेन और प्लेयर का तो समझ में आ रहा है ना, इसका मतलब क्या होता है वो, मतलब आप थोड़ा सा अंदाजा लगाइए। मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करना चाह रहा यूटिलिटी को, मैं करूंगा, लेकिन लेट मी फर्स्ट गो इनटू द कॉन्टेक्स्ट। अच्छा, अब ये जुमला जो मैं बोलूंगा ये आपने लिखना नहीं है, सिर्फ सुनना है। हाँ, खुशी हो रहा हूँ। सिर्फ जुमला सुनना है आपने, लिखना नहीं है, क्योंकि जब आप लिखेंगे तो गलत जगह पे लिख देंगे। सुनिएगा सिर्फ। बेंथम, उर्दू में बता रहा हूं, बेंथम ने जो थ्योरी दी उसकी रीजन ये थी कि उसके जमाने में पार्लियामेंट को पावर तो मिल गई थी, बट पार्लियामेंट लॉ किन असूलों पे बनाएगी। हम जब भी कोई काम करते हैं तो किसी न किसी पर्पस होता है, किसी न किसी एक लाइन ऑफ एक्शन होती है जिसमें कोई एक्शन ले रहे होते हैं। उसके ज़माने में पार्लियामेंट्स को पावर्स मिल रही थी, लेकिन पार्लियामेंट लॉ जब बनाएगी तो किस फैक्टर को जहन में रख के लॉ बनाएगी, इस बुनियाद पे बेंथम की थ्योरी ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म आती है। He gave the theory of utilitarianism to provide the basis of legislation for parliaments. In simplest of words, अब मैं ये लिखने वाली बात नहीं थी, अब मैं आपको समझाता हूँ, जो कि ब्रॉड इसी पॉइंट को एक्सप्लेन करूंगा और इसी से आपको आइडिया दूंगा और आप लिख सकते हैं। बेंथम ने पार्लियामेंट्स को कहा कि आप ये असूल ज़हन में रखेंगे, ये प्रिंसिपल्स को ज़हन में रखेंगे जब आप लॉ बनाएंगे। आप लोगों को सुना होगा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, नो लॉ शैल बी मेड अगेंस्ट कुरान एंड सुन्ना। आपने सुना हुआ ना, हमारे पार्लियामेंट में लिखा हुआ है नो लॉ शैल, यानी इस्लामी असूलों को देखते हुए आप लॉ बनाएंगे। तो बेंथम ने भी कहा किन असूलों को देखकर लॉ बनाएंगे। बेंथम ने भी पार्लियामेंट को एक मशवरा दिया, इन असूलों पर बेस करके आप लॉ बनाएंगे। इसकी थ्योरी को हम कहते हैं यूटिलिटेरियनिज्म की थ्योरी। लेट्स सी नाउ कॉन्टेक्स्ट के क्यों कहा, ऐसी क्या मुसीबत थी किसने कहा। कॉन्टेक्स्ट, अब इसके लिए आपको गौर करना पड़ेगा। ये अब सुनिएगा जी, आप सुनिएगा आपको समझ आ जाएगी चीज। बेंथम पैदा हुआ 1748 में और ही डाइड इन 1832। इसकी लाइफ टाइम में और इसकी पैदा होने से कुछ पहले कुछ डेवलपमेंट्स हो रही थी यूरोप में, और वो डेवलपमेंट्स को मैं हाईलाइट करूंगा और डेवलपमेंट्स आपको खुद ही समझा देंगी कि कैसे रिलेट करता है। आपने प्लीज समझना है, ये वर्ड्स आप मुझसे जब पूछते हैं मैं भूल जाता हूं, बट आप आइडिया लीजिएगा, मैं आइडिया समझा रहा हूं। देवर सिर्फ 3 नहीं थी, देवर 3 मेजर डेवलपमेंट्स ड्यूरिंग एंड बिफोर Bentham's life that had a profound impact on his theory. There were 3 main developments, not events, 3 main developments during and before his life, before his birth, that influenced his theory of
यूटिलिटेरियनिज्म। अब वो 3 डेवलपमेंट कौन सी थी, मैं सिंपल समझाता हूँ। उनमें से दो तीन आपने शायद सुनी होगी, तीनों शायद सुनी हो। मैंने मेरे ख्याल में जिक्र उन तीनों का नहीं किया था, बट लेट्स सी। 1, सबसे पहले शुरू करते हैं उसकी लाइफ से पहले, उसके पैदा होने से पहले। किसी ने उस क्लास में जिक्र किया था, मैंने खुद इग्नोर किया था उस पॉइंट को, मैं ताकि आज बता सकूं। और पहली डेवलपमेंट थी जी, मैं यहां पे लिख रहा हूं सारी, पहली डेवलपमेंट थी ग्लोरियस रेवोल्यूशन। इंग्लैंड में 1688 को आया था ग्लोरियस रेवोल्यूशन। यस सामना 1688 को। अब ये ग्लोरियस रेवोल्यूशन क्या था, आसान लफ्ज़ों में मैं समझा दूं तो 1688 को इंग्लैंड में जो आपको मैंने लॉक की दफ़ा और हाब्स की दफ़ा बताया था कि हाब्स और लॉक के ज़माने में टसल चल रही थी बिटवीन किंग एंड द पार्लियामेंट। किंग और पार्लियामेंट के दरमियान एक टसल चल रही थी, किसके पास पावर होगी। तो 1688 में उसी टसल के नतीजे में the king was deposed, he went into an exile। बादशाह ने बादशाहत छोड़ी, भाग गया, he went into exile। अगर बादशाह मुल्क से फरार हो जाए, चला जाए, who got all the powers then, किसके पास पावर चली गई होंगी, पार्लियामेंट के पास। आर्मी कहां से गई वैस, पाकिस्तान नहीं था, इंग्लैंड था। सो वहां पे द किंग वॉज डिपोज्ड एंड द पावर ट्रांसफर्ड टू द पार्लियामेंट, बिकॉज तसली दो के दरमियान में थी, किंग और पार्लियामेंट के दरमियान में। सो पावर शिफ्टेड टुवर्ड्स पार्लियामेंट। और ब्रिटेन में पहली दफा द प्राइम मिनिस्टर बिकेम द चीफ एग्जीक्यूटिव। उनका नाम क्रॉमवेल था शायद, मेरे ख्याल में, अगर मैं गलत नहीं हूँ, शायद क्रॉमवेल वॉज द नेम ऑफ दैट प्राइम मिनिस्टर, जो पहले प्राइम मिनिस्टर भी कहलाते हैं, अक्सर ये एमसीक्यूज भी आ जाता है। क्रॉमवेल, यस। So he became the chief executive, he became the first prime minister जो इंग्लैंड के अंदर पावरफुल बन गए। और प्राइम मिनिस्टर थे, पार्लियामेंट से थे, पार्लियामेंट के पास सारी पावर ट्रांसफर होगी। ये बादशाह का जो डिपोज होना है, बाय जाना है, ये था ब्लडलेस, बगैर किसी लड़ाई के, बगैर किसी जंग के। नहीं, जंग नहीं हुई थी, ब्लडलेस था। इट वाज, ही वाज नॉट, मुझे नहीं पता किंग कौन थे, इट वाज ब्लडलेस, कोई खून नहीं बहा था, वो एग्जाइल में चले गए थे। अच्छा, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कहां चले गए थे, असल पॉइंट इस पे आता है। 1688 में ग्लोरियस रेवोल्यूशन अकर्ड और द किंग वाज डिपोज्ड, पावर्स केम टू द पार्लियामेंट। अगला सवाल, जब पावर पार्लियामेंट को ट्रांसफर हुई, उससे पहले थी बादशाह के पास, किंग वाज ऑल पावरफुल। मेरा आपसे सवाल है, सोच के जवाब दीजिएगा, थिंक बिफोर यू आंसर दैट। अगर पावर थी बादशाह के पास, then king used to make laws on what grounds, किस बुनियाद पे बनाता था? एग्जैक्ट डिवाइन कह सकते हैं, मैं इसको कहूंगा आर्बिट्रेरी, और नाम दे देता था डिवाइन का, अपने इंटरेस्ट के लिए बनाता था, लेकिन नाम दे देता था कि जी हाँ डिवाइन के नाम पे। मैं कह रहा हूं खुदा कह रहा है, बट एक्चुअली क्या होता था, ही यूज्ड टू सर्व हिज ओन प्रेरोगेटिव, एग्जैक्टली डिस्क्रिशनरी पावर, अपनी जाती पावर, विदाउट शेयरिंग विद एनीबॉडी, ही वुड डू व्हाटएवर ही लाइक्ड, व्हाटएवर ही विश्ड, आल्सो नाम दे देता था डिवाइन का। तो दोनों आंसर ठीक है, डिवाइन वाले भी ठीक कह रहे हैं, हिज ओन विल वाले भी ठीक कह रहे हैं, लेकिन डिवाइन को इंटरप्रेट करता था अपनी मर्जी से, कि मैं एंटाइटल्ड था दैट वो ही कैन डू व्हाटएवर ही लाइक्स टू। ऑल पावरफुल किंग, वो जो हाब्स की बकौल लेवाइथन है, मैकियावेली के वो बकौल द प्रिंस है, बट ऑल पावरफुल किंग, अपनी मर्जी से जो चाहा लॉ बना दिया। नाउ उसी के मुजालम से तंग आके लोगों ने कहा बादशाह जालिम है, हटा दें, डिवाइन हम कैसे जाने खुदा क्या कह रहा है। तो एनलाइटमेंट की थ्योरी कहती थी हमें रीजन चाहिए भाई, हमें लॉजिक चाहिए, हमें एविडेंस चाहिए, वी डोंट एक्सेप्ट द फेथ। अब पार्लियामेंट के पास जब पावर गई, अब लॉ बनाना है पार्लियामेंट में, लॉ हैज टू बी मेड बाय द पार्लियामेंट। मेरा सवाल है, जब पार्लियामेंट लॉ बनाएगी तो किन प्रिंसिपल्स को देखते हुए बनाएगी, ऑन व्हाट ग्राउंड्स विल इट मेक द पॉलिसी। अब कोई कह रहा था जनरल विल, कोई जो मर्जी कह ले, पीपल सेंट्रिक जो मर्जी कह दे। जेरेमी बेंथम, अब यहां पर सुनिएगा,
जेरेमी बेंथम was living at a time, अब ये सुनिएगा, जेरेमी बेंथम was living at a time, ये जुमला बड़ा गौर से, बेंथम was living at that time when parliament had to find the grounds or the principles under which it should make laws. किन असूलों पे लॉ बनाए, जिस तरह आप लोगों ने डिफरेंट ओपिनियन दिए, बहुत सारे लोग डिफरेंट ओपिनियन दे रहे थे दैट इस बेसिस पे उसे लॉ बनाना चाहिए. Bentham also provided his theory of utilitarianism as the basis of the lawmaking. बेंथम ने कहा आप लॉ बनाओगे तो लॉ का जो असूल होगा दैट शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म, या पेन और प्लेयर, पेपर में जो लफ्ज लिखा होगा आप वो लफ्ज डाल देंगे, पेन और प्लेयर की बेसिस पे लॉ बनाए या यूटिलिटेरियनिज्म की बुनियाद पे लॉ बनाए. अब ये यूटिलिटेरियनिज्म है क्या, ये तो ऑब्वियसली हम बाद में देखेंगे, बट ही आइडियाज में रखिएगा, ही वाज गिविंग दिस आइडिया फॉर लॉ मेकिंग बिकॉज the parliament had to find the basis of the lawmaking. There were laws from 1688 to 1648, even before 1688 से पहले के भी laws थे, parliament भी laws बनाती रही 1688 से onwards, लेकिन obviously law बनाना और बात है, लेकिन law की basis पे debate होना और बात है. There was a debate going on that what should be the basis of lawmaking. जैसे हमारे यहाँ पिछले 73 years से आइन में तो लिखा हुआ है नो लॉ अगेंस्ट कुरान एंड सुन्ना, बट क्या अभी भी डिबेट नहीं होती कि क्या सारे लॉ मजहब की बुनियाद पे होने चाहिए? क्या पाकिस्तान में किसी हद तक डिबेट नहीं होती ब्लास्फेमी लॉज के बारे में कि क्या वो उस तरह से चलने चाहिए? दैट्स अ डिबेट. तो इसी तरीके से वहां भी डिबेट ये थी कि ये ऑनगोइंग डिबेट थी दैट लॉ मेकिंग की बेसिस क्या होनी चाहिए, ऑन व्हाट प्रिंसिपल्स, व्हाट ग्राउंड्स शुड वी मेक द लॉ. लेकिन ये एक डेवलपमेंट है. दूसरा, अब ये सारों को मिलकर फिर मैं इकट्ठा भी आऊंगा. दूसरी, दैट वाज फ्रेंच रेवोल्यूशन. फ्रेंच रेवोल्यूशन कब आया था? 1789. 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन then brought end to monarchy in France. लुई 16 को ग्लूटीन कर दिया गया, आप लोगों ने शायद ये सुना हो या पढ़ा हो, उसको एग्जीक्यूट कर दिया गया. और पावर किसको ट्रांसफर हुई? द पावर वाज ट्रांसफर्ड टू द पार्लियामेंट. और हम ये फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे बाद में जाके, हम उसको डिटेल से तो नहीं पढ़ते, एक आइडिया सिर्फ देते हैं दैट फॉर द फर्स्ट टाइम द फ्रांस बिकेम रिपब्लिक. फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रांस बिकेम रिपब्लिक. रिपब्लिक का मतलब ये होता है जहां हेड ऑफ द स्टेट मोनार्की ना हो, विरासत में मुंतकिल करने वाली हेड ऑफ द स्टेट ना हो, जहां हेड ऑफ द स्टेट चोजन हो, उसे चूज किया गया हो, उसे इलेक्ट किया गया हो. नो जी, आई एम एब्सोल्युटली श्योर फ्रेंच रेवोल्यूशन वाज द फुल ऑफ ब्लडशेड एंड इंग्लैंड्स कू वाज ब्लडलेस. ये आई एम डेड श्योर अबाउट दैट. ऑब्वियसली आप पढ़िएगा रेन ऑफ टेरर हमजा, एग्जैक्टली टेररिज्म का लफ्ज ही वहां से निकला हुआ है सॉर्ट ऑफ. अच्छा, फ्रेंच रेवोल्यूशन में ग्लूटीन कर दिया गया बादशाह, उसकी फैमिली को, उसका एक बेटा भाग के चला गया था, बट लेकिन बहुत सारे और लोग भी मारे गए थे. लेकिन पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है दैट पावर शिफ्टेड फ्रॉम मोनार्की खत्म कर दी गई, किंग को एग्जीक्यूट कर दिया गया, उसकी फैमिली को एग्जीक्यूट कर दिया गया, कुछ लोगों को, और पावर ट्रांसफर्ड टू द पार्लियामेंट. और हम कहते हैं फ्रांस बिकेम रिपब्लिक. फ्रांस बन गई थी रिपब्लिक, मोनार्की खत्म करके पार्लियामेंट के पास पावर आ गई. अब अगेन पार्लियामेंट आ गई है, और वहां की पार्लियामेंट का नाम था और आज भी है नेशनल असेंबली. नेशनल असेंबली वाज एस्टैब्लिश्ड इन फ्रांस. अब वो नेशनल असेंबली जो है, जो पार्लियामेंट कहलाती है, अब उसने अगर लॉ बनाना है, इफ द पार्लियामेंट हैज टू मेक लॉज, तो बेंथम गेव द थ्योरी ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म कि अगर आपने भी लॉ बनाना है, फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म. इस प्रिंसिपल को फॉलो करें. Utilitarian principle should be the principle for law making for the French Parliament. Third, US Revolution. इसको अमेरिकन रेवोल्यूशन कहते हैं, मैंने यूएस लिख दिया. अमेरिकन रेवोल्यूशन कब आया था?
1776 exactly. French American Revolution came in 1776. War of Independence was fought. As a result of which, then 1883 में they established a confederation, and in 1789 में the United States established or framed its constitution. यूएस ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स किया 1789 में जाके. 87 में बना था, 89 में एनफोर्स हुआ. जब यूएस कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स हुआ 1789 में, तो उस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया दैट लॉ मेकिंग शैल बी डन बाय द कांग्रेस इन यूएस. यूएस की पार्लियामेंट को हम कहते हैं कांग्रेस, कि कांग्रेस बनाएगी कानून यूएस के लिए. The lawmaking power was given to US Congress, जिसको हम लेजिस्लेचर कहते हैं या पार्लियामेंट कहते हैं हम. लेकिन सवाल वही है, अमेरिका में पार्लियामेंट के पास पावर है या कांग्रेस के पास पावर है, फ्रांस में पार्लियामेंट के पास पावर है, ब्रिटेन में पावर वाज मूविंग अवे फ्रॉम मोनार्कीज. देखो ना, बर्तानिया में भी पहले मोनार्की थी, अमेरिका में मोनार्की थी, ब्रिटिश मोनार्की रूल कर रही थी, फ्रांस में मोनार्की थी, ब्रिटेन में मोनार्की थी. मोनार्की से पावर शिफ्ट हो रही थी टुवर्ड्स द पार्लियामेंट. और जब मोनार्कीज थी, जो चाहता था लॉ बना लेती थी. अब जब पार्लियामेंट आ गई हैं, पार्लियामेंट जो चाहे लॉ नहीं बना सकती. दे मस्ट फॉलो सम ऑफ द प्रिंसिपल्स. उन्हें किसी न किसी प्रिंसिपल को फॉलो करके लॉ बनाना है. और वो प्रिंसिपल क्या होगा? बेंथम प्रोवाइडेड द प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म एज अ मेथड, एज अ गाइडलाइन फॉर मेकिंग लॉज. लॉ मेकिंग के लिए यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल को ध्यान में रखा जाए. दिस वाज व्हाट वी कॉल द यूटिलिटेरियनिज्म. दिस वाज द कॉन्टेक्स्ट. अच्छा, अब मेरा सवाल, आखिरी जुमला बोलूंगा. अगर इफ देयर वाज नो पावर ट्रांसफर टू पार्लियामेंट्स को पावर ट्रांसफर ना हो रही होती, मोनार्की ही चल रही होती, क्या इसकी थ्योरी आती? Obviously not. So his theory was given at a time when Europe was passing through the transition from monarchies to the parliaments, and therefore we have to study that. That's why we are studying his theory of utilitarianism. This is the basic idea, basic theory of basic context of his theory. Now, इस कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रखिएगा. अभी भी जिनको समझ थोड़ा सा नहीं आया होगा, ज्यादा समझ आ जाएगा जब मैं यूटिलिटी का मीनिंग समझाता हूँ. बिकॉज मैं पहले नहीं समझाना चाह रहा था. अगर मैं पहले समझाता तो आप कंफ्यूज हो जाते. अब मैं यूटिलिटेरियनिज्म का मीनिंग समझाऊंगा, और फिर एक दफा अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं फिर इसके साथ लिंक करूंगा कि आप इसको लिंक कीजिएगा. लेट्स बिगिन हिज थ्योरी. उसकी थ्योरी से स्टार्ट करते हैं. बेंथम्स थ्योरी ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म हमजा नॉट रेलेवेंट टू माई पेपर, इसी डिस्कस नहीं कर रहा. थ्योरी क्या है? थ्योरी स्टार्ट करेंगे हम प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी से. आप जब पेपर में लिखेंगे तो थ्योरी स्टार्ट करेंगे प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी. अच्छा, लफ्सी मतलब क्या होता है? लिटरल मीनिंग क्या होता है यूटिलिटी का? लिटरल मीनिंग एनीबॉडी? यूजफुलनेस, बेनिफिट, यूजेज, अफादा कहते हैं, नहीं फायदा कहते हैं, अफादियत कैसे कहते हैं? हाँ, यस, ट्रू. जब किस चीज का फायदा हो तो इंपैक्ट की बुनियाद पे. अच्छा, मेरा आपसे एक और सवाल. यूटिलिटी का मतलब होता है फायदा. मिसाल के तौर पर मार्कर है, नहीं लिख रहा, तो क्या इसकी यूटिलिटी है? ये मार्कर है, लिख नहीं रहा, इज इट ऑफ सम बेनिफिट? नो. अच्छा, अब जरा इस चीज को मैं और सिंपल कर देता हूं. मैं आपसे कहूं ये मार्कर दुनिया की बेहतरीन इंक से बना हुआ. ये जब इसका जो बनने का काज था, ये बनने की जो इंग्रेडिएंट्स हैं, दे वर द बेस्ट एवर इंग्रेडिएंट्स इन द वर्ल्ड. लिखता फिर भी नहीं है.
Does it have a utility? नहीं. इसका मतलब है, यूटिलिटी का मतलब होता है when you try to सुनिएगा जुमला, when you try to understand the value of something, when you try to understand the value of something that is based on its impacts and not on its cause. मार्कर लिख रहा नहीं लिख रहा, इससे फर्क पड़ता है ये बना किस चीज का है, हमें इससे कोई सरोकार नहीं है. वी डोंट केयर what is the cause behind making this marker, but we care is it working or not. तो किसी चीज की वैल्यू को हम मेजर करते हैं फ्रॉम इट्स इम्पैक्ट्स, नॉट फ्रॉम इट्स सोर्स. द एंड जस्टिफाई द मीन्स. वैल्यूएबिलिटी, impacts, implications will measure whether it's a good thing or it's a bad thing. अब वैसे आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, जनरली पूछ रहा हूं. यस मिशाल, ट्रू. जरा सवाल सुनिएगा. हमारे आइन में लिखा है नो लॉ शैल बी मेड ऑन अगेंस्ट कुरान एंड सुन्ना. कुरान और सुन्ना के खिलाफ कोई लॉ नहीं बनाया जाएगा. अच्छा, मेरा आपसे सवाल यह है, क्या हमारे यहां लॉ इस बुनियाद पे बनाया जाता है कि उसका इंपैक्ट क्या आएगा, या इंपैक्ट को नहीं देखा जा रहा बल्कि काज ऑफ द लॉ क्या होगा? तो हमारा काज पे डिपेंड करता है या इंपैक्ट पे? कॉज पे. लॉ बनेगा, इस्लाम के खिलाफ नहीं बनेगा, लेकिन उसका इंपैक्ट क्या होगा? व्हाट विल बी द इंपैक्ट ऑफ द लॉ? इज इट समथिंग रिटन? नहीं लिखा हुआ कहीं भी. नॉट एट ऑल. इस्लाम की बुनियाद पे लॉ बनेगा, चाहे उस लॉ की वजह से फायदा हो रहा हो, चाहे उस लॉ की वजह से किसी का नुकसान हो रहा हो. वी डोंट केयर. नो लॉ शैल मेड अगेंस्ट कुरान एंड सुन्ना, चाहे उसका किसी को नुकसान ही क्यों ना हो. इंपैक्ट की बुनियाद पे नहीं बल्कि काज की बुनियाद पे इस्लाम बनेगा. क्योंकि हम उम्मीद ये रखते हैं, हमारा आर्गुमेंट ये है कि इस्लामिक प्रिंसिपल है ही ऐसा जिसका इंपैक्ट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता. We assume that if cause is Islam, then obviously its impact can never be wrong. Yes, exactly, Taiba. When it is made on the basis of Islam, उसका impact negative नहीं हो सकता. लेकिन assumption है ना हमारी. लेकिन जो argument दिया गया है हमारे constitution में, वो लिखा है बुनियाद ये होगी, impact जो भी आ गया. अच्छा, इसी तरीके से ये पॉइंट सुनिएगा. अब बेंथम से पहले बादशाह जब लॉ बनाते थे, डिड दे कंसिडर द इंपैक्ट्स व्हाइल मेकिंग द लॉज? दे डिड नॉट. काज पे मैं बना रहा हूं, व्हाट आई एम सेइंग इज अ सेइंग ऑफ द गॉड. इफ आई पे आस्क यू टू पे टैक्सेस, इफ देयर इज अ लॉ टू पे टैक्सेस, दैट्स अ गॉड सेइंग इट. अगर आप गरीब होते जा रहे हैं, ये आपका मसला है. वी डोंट केयर अबाउट द इंपैक्ट. फ्रांस में भी यही होता था, बादशाह टैक्स लगाई जा रहे थे, लोग गरीब हुए जा रहे थे. उन्होंने कहा जी इंपैक्ट में मैटर नहीं करता. वी डोंट केयर व्हाट आर द इंपैक्ट्स ऑफ टैक्सेशंस. यू हैव टू सी हु विल सिंग इट. काज क्या है लॉ का? और काज है जी बादशाह, और बादशाह के पीछे है खुदा. सो अगर उसने कह दिया, जो मतलब पोप ने कह दिया खुदा का, और किंग ने कह दिया, यू हैव टू फॉलो द ऑर्डर. यू डोंट नीड टू मेक लॉ on the basis of impacts. उसकी वजह यह होती थी कि were kings responsible to the people? Were they answerable to the people? They were not. So simply, अब इस पॉइंट को मैं अगर लिंक करूं, अब आखिरी पॉइंट को, प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी सेज दैट द वैल्यू ऑफ समथिंग must be judged from its impacts, not on the basis of its source or its cause. The value, the quality of anything must be judged from the impacts it has, the implications, the effects it has, rather than the source or the causes. किसी चीज की वैल्यू उसके इंपैक्ट पे डिपेंड करती है और उसके सोर्स पे डिपेंड नहीं करती. दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ
यूटिलिटी। नाउ इसी पॉइंट को, इसी प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी को बेंथम अप्लाइज इट ऑन लॉ। The principle of utility is applied by Bentham on the law. Bentham says, yes, दनियाल, लेकिन हम चूंकि लॉ पे रहेंगे पेपर में, चूंकि उस बेंथम ने लॉ से कहा तो हम लॉ से लिंक करेंगे, वरना तो हर जगह होता है। Bentham says that the laws, the quality of the law must be judged by the impacts it has on the people and not on the sources of the law. I repeat, the value or the quality of the law must be judged from the impacts it has on the society and not on the sources of the law. सोर्स पे डिपेंड नहीं करना चाहिए कि एक लॉ बनाने वाला कौन है, लॉ बनाने की वजह क्या है, देखना यह चाहिए कि लॉ का इंपैक्ट क्या है। Let's assess the impacts of the law and let's decide the quality of the law on the basis of impacts it has on the people. This principle of utility should be applied in the lawmaking. So जब parliaments law बनाए, England की parliament, France की parliament, American Congress, if they have to make law, they need to keep in mind what will be the impacts of the law on the people of their respective states. And that should be the sole criteria to judge the law, a good one or a bad one. अच्छा लॉ, बुरा लॉ मैयर इस बात पे किया जाएगा उसके इंपैक्ट्स लोगों पे क्या आते हैं। अब मेरा आपसे एक सवाल है छोटा सा, व्हाई ही इज आस्किंग देम टू केयर अबाउट द पीपल, व्हाई इज आस्किंग देम कि देखें लोगों पे इंपैक्ट क्या आ रहा है, व्हाई इज सेइंग इट? यस अरसलान, बिकॉज लोगों ने ही तो चूज करना है उनको, रिप्रेजेंटेटिव्स को। अगर लोग सेटिस्फाइड होंगे पार्लियामेंट रहेगी बल्ले बल्ले आपकी। इफ पार्लियामेंट, इफ पीपल आर नॉट हैप्पी, पार्लियामेंट विल ऑब्वियसली बी अफेक्टेड बाय इट। सो पार्लियामेंट चूंकि आंसरेबल है लोगों को, और लोग की अगर इंपैक्ट अच्छा होगा लोग पार्लियामेंट को दोबारा इलेक्ट करेंगे, अगर पार्लियामेंट इंपैक्ट बुरा होगा पार्लियामेंट को लोग बुरा कहेंगे। Exactly, because parliamentarians are elected by elected by the people. इसीलिए लोगों के इंटरेस्ट के लिए आपको। लेकिन अगला सवाल यह है, अब प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी तो आ गया, ऐसा लॉ बने और वैल्यू ऑफ द लॉ शुड बी जज फ्रॉम इट्स इंपैक्ट्स नॉट फ्रॉम इट्स सोर्सेज। अब आप इसको रिलेट करें तो आपको समझ आ रही होगी। जब पार्लियामेंट बन रही थी तो उनको कह रहा था कि किंग तो बनाता था कि जी बिकॉज किंग इज मेकिंग द लॉ and there is God behind the king, so you should follow the law, चाहे उसका इंपैक्ट आप पे नेगेटिव ही क्यों ना आए। उसने कहा अब वो बात खत्म हो गई, नाउ द पार्लियामेंट्स आर पावरफुल, एनलाइटनमेंट का पीरियड आ गया, आपके पास रैशनैलिटी डोमिनेट हो गई। नाउ द पार्लियामेंट शुड मेक लॉज ऑन द बेसिस ऑफ हाउ दोज लॉज इंपैक्ट द पीपल। वो अपने इंपैक्ट से, कभी आपने सुना हुआ गवर्नमेंट क्या करती है, अक्सर कोई डिसीजन करे और उनको लग रहा हो कि इसकी वजह से आवाम सड़कों पे आ जाएगी तो वो डिसीजन नहीं करते आमतौर पर, या फिर यू टर्न ले लेते हैं कि नहीं लेते। उन्हें डर लग रहा होता है अगर ऐसा डिसीजन किया तो आवाम जो है वो रिएक्ट करेगी, द इम्पैक्ट विल नॉट बी टू गुड, पीपल माइट रिएक्ट, तो वो ऐसा लॉ बनाने से डरते हैं बाज़ औक़ात, दे समटाइम्स फियर दैट। दिस इज द थिंग कि जब भी कोई लॉ बना जाए उसका इम्पैक्ट देखा जाए। अक्सर आप और मैं कहते हैं हिरासमेंट का लॉ तो है लेकिन उसका इम्पैक्ट नहीं आ रहा, इट इज नॉट एन इफेक्टिव लॉ। हम अक्सर कहते हैं जी एक लॉ बना है, ज़ेनब अलर्ट बिल है चाइल्ड अब्यूज के बारे में, तो वो देखना चाहिए उसका इम्पैक्ट क्या है सोसाइटी के अंदर। हमने कहा मिलिट्री कोर्ट्स बनी है, हम देखते हैं मिलिट्री कोर्ट्स का इम्पैक्ट क्या है सोसाइटी के ऊपर। तो हम हर चीज को उसकी क्वालिटी को मेजर करते हैं, उसके एफिशिएंसी को मेजर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द इम्पैक्ट्स। इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी। सो ही अप्लाइज इट ऑन द लॉ। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के अंदर, ये बात तो तय हो गई पार्लियामेंट शुड मेक लॉ कीपिंग इन माइंड द इम्पैक्ट्स ऑफ द लॉ ऑन द पब्लिक, बट द क्वेश्चन इज लोग चाहते क्या हैं,
what is the need of the people, what are the interest of the people. लोगों के इंटरेस्ट को देख के बनाया जाएगा, उसका इंपैक्ट लोगों पे क्या आता है देखा है, लेकिन लोग चाहते क्या हैं, व्हाट पीपल वांट एक्चुअली. अब यहां पे मसला ये है, आपने कहा लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी, आप ले आए लॉक को, वो तो लॉक ने कहा था. बेंथम क्या कहता है? अब वो लॉक की बातें हो गई, लॉक हॉब्स की बातें हो गई. बेंथम क्या कहता है? बेंथम फिर अपनी थ्योरी देता है. बेंथम in order to explain, yes, अभी आ रहा हूं इसके बाद. Bentham says that, अब यहां पे कहता है क्योंकि हमने लोगों पे इंपैक्ट देखने हैं, लेट्स अंडरस्टैंड द ह्यूमन नेचर को देखते हैं. बिकॉज दिस लॉ हैज टू बी अप्लाइड ऑन ह्यूमंस, देयरफॉर लेट्स सी लोग हैं क्या, नेचर क्या है. Bentham says, and I quote his words, Bentham कहता है, man is under the sovereign command of two masters. Bentham ये कहता है, man is, तमाम इंसान जो हैं, they are under the two masters. दो ऐसे फैक्टर्स हैं जो इंसानों को डिक्टेट करते हैं, जो इंसानों के मास्टर्स हैं हर इंसान के अंदर, who dictate human behavior. And those two masters are pain and pleasure. Every human action is under the influence of pain and pleasure. मिसाल के तौर पर वो कहता है कि people like to do everything that gives them pleasure and they want to avoid everything that pains them. हर वो चीज जिससे उन्हें पेन होता हो उससे वो अवॉइड करते हैं, हर वो चीज जिससे प्लेजर मिलता हो उसे फॉलो करते हैं. They like to do what pleases them and they like to avoid what pains them. Is it true or not? हमारे माशरे में क्या कहते हैं, जो खुद बंदा अपने आप को पेन ले रहा हो, somebody wants to like to have pains, तो उसको हम कहते हैं ये साइको है. नहीं कहते, इज अ काइंड ऑफ साइको, जो हर वक्त दुख में रोना धोना रह रखता है, हर वक्त अफसोदा रहता है, यू नो, काइंड ऑफ फ्रॉम उसको. तो दैट्स अ सिंपल आइडिया. इफ समबडी कंटिन्यूज टू बी लिविंग इन पेन, हमें डर लगता है उसने सुसाइड कर लेना है. और आजकल देवदास, आजकल वैसे भी सुसाइड के अटेम्प्ट काफी ज्यादा हुए हैं. तो लोग कहते हैं जो बंदा आपको नजर आ रहा हो कि जी वो अपने आप को आइसोलेट फील कर रहा है, पेन में फील कर रहा है हर वक्त, यू नीड टू हेल्प देम, you need to help those kind of people ताकि वो suicide पे ना चला जाए, stress में ना चले. So we want to avoid pains and we want to gain pleasures. हर वो काम करते हैं जिससे हमें प्लेयर मिलता है. लेकिन अगला पॉइंट, अब ये सारा बेंथम कह रहा है, अच्छा मैं नहीं कह रहा, बेंथम कह रहा है that for people, for humans, there is a simple definition of good and bad. There's a simple definition of good and bad. Everything that gives pleasure to people is a good thing. And everything that pains them is a bad thing. आसान definition है good and bad की. अच्छी चीज क्या होती है? What is good thing? क्या जो हमें पेन दे, do we call that thing a good thing? Obviously not. We call everything that pains us as a bad thing. Pain को आप ब्रॉडली सेंस में देखिएगा, एवरीथिंग दैट हर्ट्स अस इज अ बैड थिंग एंड एवरीथिंग दैट गिव्स अस प्लेजर इज अ गुड थिंग. सिंपल. तो लोगों की कैलकुलेशन बड़ी आसान होती है. पीपल लाइक टू डू गुड एंड अवॉइड बैड. और गुड क्या है? जो उनको प्लेजर दे. बैड क्या है? जो उनको पेन दे. यस एग्जैक्टली, बैड इज इविल, बैड इज डूइंग नेगेटिव. अच्छा, पेन लेते हैं, सॉरी पेन अवॉइड करते हैं, प्लेजर लेते हैं. दिस इज सिंपल कैलकुलेशन फॉर द पीपल. अब अगला सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट. उसने प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी को इससे लिंक किया. कैसे लिंक किया? उसने कहा स्टेट मस्ट मेक लॉज दैट शुड क्रिएट प्लेजर एंड इट मस्ट मेक लॉज दैट शुड रिड्यूस पेन्स. स्टेट ऐसे लॉ बनाए जो प्लेयर को मैक्सिमाइज करें, पेन्स को मिनिमाइज करें. ये बात समझ आ रही है? अगर प्लेयर्स को मैक्सिमाइज किया जाएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल वुड गेट प्लेयर्स, विल इट बी अ गुड लॉ
or it will be a bad law? It will be a good law because people are happy with that. And if it makes a law which pains people, then that's a bad law. Any law that creates pains is a bad law. It's not a good law. तो अब लॉ की क्वालिटी कैसे जज होगी? Whether it creates players or it creates pains. The quality of the law will be measured from whether it causes players or pains among the people. This is called Bentham's theory of Bentham principles of utilitarianism. Utilitarianism is the principle that a law should be made according to whether it provides pains or it creates pleasures for the people in a state. If this principle is followed, this is called the utilitarianism. I am not judging जी, I am not calling it a good theory or a bad theory. ना पेपर में आपने कहना है. This is simple. अभी खत्म नहीं हुई, अभी आगे चलेंगे, but यहां तक समझ आ गई चीज की. Did you get this point? सिंपल है, कोई कॉम्प्लिकेशन है नहीं इसके अंदर. और बड़ी, अगर आप फॉरगेट अबाउट एवरीबॉडी एल्स, अपने आप को सोचिए, आपको भी यही लगता होता है. बड़ी आसान सी मिसाल है. अगर मैं कहूं CSS की सीटें कम कर दी हैं, विल इट बी अ गुड लॉ और अ बैड लॉ? इट विल बी अ बैड लॉ. जुल्म होगा. दैट्स ट्रू. आप अपने जाती इंटरेस्ट को देख रहे हैं ना. यू आर सीइंग योर इंटरेस्ट बिकॉज इट विल कॉज पेन इन यू. दैट्स सिंपल वन. अगर आप अपनी जाती इंटरेस्ट को देख रहे हैं, so if I say that they have doubled the so people, if you make a law that creates players, that's a good law. If you make a law that creates pains, it's a bad law. law की क्वालिटी मेजर की जा रही है. लॉ की क्वालिटी मेजर की जा रही है ऑन द बेसिस ऑफ द इंपैक्ट्स दैट इट हैज ऑन द पीपल. इस प्रिंसिपल को हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म. It's a good question. I will come to that point. Exactly. Now let's see. Quality of law से मतलब है वो उसने कहा पार्लियामेंट जब लॉ बनाए तो वो होगा क्या प्लेयर क्रिएट कर रहा है या पेन क्रिएट कर रहा है. क्वालिटी इज ऑटोमेटिकली जज वेदर पीपल आर हैप्पी और पीपल आर नॉट हैप्पी. सिंपल. इट्स द सेम थिंग. इट्स द सेम पॉइंट. Principle of utilitarianism mean the principle of law making should be judged on whether the law creates pleasure or pains. It's simple one line definition of the utilitarianism. Is it clear? Should I move? Yes, अभी आ रहा हूं उस पर. यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया. अगले पॉइंट पे आ रहे जो अरवा आपने सवाल उठाया. अब सवाल ये था, व्हाट इज द पेन एंड व्हाट इज प्लेयर. पेन क्या है, प्लेयर क्या है. Bentham provides a list of 14 players and 12 pains. Bentham provides a list of 14 players and 12 pains. अब वो बड़ी मुश्किल से मैं रटे लगाता हूँ, फिर भूल जाता हूँ, तो आपको पेपर में रटे लगाने पड़ेंगे. वो पेन्स कौन से हैं, प्लेयर्स कौन से हैं. मैं 2-4 सिर्फ नाम बता देता हूँ. फॉर एग्जांपल वो प्लेयर में नाम लेता है और वैसे ये इसके 12 पेन्स हैं, 14 प्लेयर्स हैं और इनमें से 7-8 ऐसे हैं जो ओवरलैप करते हैं. यानी सेम पॉइंट कैन बी प्लेयर एंड द पेन एज वेल. लेट मी गिव यू फ्यू एग्जांपल्स. आप रीडिंग में देखेंगे आपको वो प्लेयर्स पेन्स मिल जाएंगे. एक मिसाल, फॉर एग्जाम्पल वो कहता है जी फेम, गुड नेम जिसको आप कहते हैं, दैट्स अ प्लेयर. और व्हाट अबाउट गुड नेम के साथ वेल्थ हो जाए, यह सामना वेल्थ, इट्स अ प्लेयर. पावर, प्लेयर. इसी तरीके से ही गिव्स ग्लोरी, यस हमने लिखा हुआ है ग्लोरी, इट्स अ प्लेयर. इसी तरीके से मेमोरी, इट्स अ प्लेयर. बेनेवलेंस, इट्स अ प्लेयर. वो लिस्ट देता है, 14 वर्ड्स होंगे प्लेयर के और वही पेन्स भी हैं. फॉर एग्जाम्पल एक मिसाल, यस एसोसिएशन भी है, नॉलेज भी है. अच्छा एक मिसाल दे रहा हूं आपको. मेमोरी
Is it always player or it can also be a pain? It can also be a pain, obviously बात है. अच्छा, इसी तरीके से उसने लिस्ट जो दी है, अच्छा हम अपनी तरफ से नहीं करेंगे, प्लेयर भी है पेन भी है, वो फिर कहता है इल नेम, बदनामी. Is it a player or pain? It's only pain, obviously बात है. It cannot, I don't think तो ये कहने का मकसद है, you will have to take a list of 12 pains and 14 players. वो कहता है जी ये 14 players प्रमोट करने चाहिए, ये 12 pains को अवॉइड करना चाहिए. There should be such kind of law. अगला सवाल, how to measure pain and player. पेन और प्लेयर को मेजर कैसे किया जाएगा? हाउ टू मेजर के पेन कम हो रहा है, हाउ टू मेजर के प्लेयर ज्यादा हो रहा है, कैसे मेजर करेंगे? अब वहां पे अब वो एक जुमला बोलता है, अब बेंथम कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, अच्छा, और वो कहता है कि द पेन्स एंड प्लेयर कैन बी, द पेन एंड प्लेयर कैन बी measured by statistically, quantitatively. The pains and players can be measured quantitatively by these factors. He provides some factors on the basis of which we can quantify pains and players. So factors on the basis of which we can quantify or measure the pains and players. अब वो कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी बुनियाद पे हम मेजर करते हैं, क्वांटिफाई करते हैं? फॉर एग्जांपल उसने कोई 5-6 कहे हैं, मैं यहाँ पे 3-4 बता रहा हूँ. फॉर एग्जांपल वो एक कहता है दैट इज सर्टेनिटी. Certainty is, for example, how certain the government is that a law will create player. When you are making law and you are sure that this law is definitely going to create players. How certainly a law can create players is one factor that needs to be kept in mind in quantification. Intensity. Simply, what is the force of player? What is the force of player that can be again a second factor? Then obviously we can also understand, we can also use this one as a second factor in measuring the quantity. Intensity कितनी है? जो player create कर रहा है क्या low intensity player है या it is causing a significantly higher intensity of players? Duration. How intense the player is, इसको हम कहते हैं duration. Duration का मतलब है for how long the pain or player will last. क्या ये short term pain था, थोड़े टाइम के लिए था, या ये it's a perpetual pain or it's a perpetual player that will be created. So the duration means कितने लंबे अरसे तक ये पेन और प्लेयर रहेगा. This should also be a factor in quantification of pain and player. आसान है. ड्यूरेशन का मतलब होता है एक लॉ बनाया, वो 1 साल के लिए प्लेयर होगा. इमरान खान साहब गवर्नमेंट में आए, उन्होंने कहा कि जी ये जो बुरा वक्त है ये 2 साल के लिए, फिर हालात ठीक हो जाएंगे. सो यू हैव टू बियर द पेन फॉर 2 years. तो डिपेंड करता है, आप एक टफ टाइम में गुजरे हैं, एक स्टेट लॉ बनाती है, बट वो ऑब्वियसली एक शॉर्ट टर्म पेन क्रिएट कर रही है या लॉन्ग टर्म प्लेयर क्रिएट की जा रही है. तो अगर मैं आपसे पूछूं रफील, आपके सवाल के जवाब में ही, अगर एक लॉ है दैट क्रिएट्स पेन for longer period of time, will it be a good law? Obviously not. It will not be. But this is how you have to understand. That's a bad thing. Extent. Extent कहते हैं that to how many people are affected by that law. Whether a law creates
player in most of the people and pains in very few people. Will that be a good law? It creates pleasure for majority of them and pain for very few of them. It's a good law. But if a law creates pain in large number of people and pleasure in few people, then that's a simply bad law. So जब आप law की quality को judge कर रहे हो, उसको quantify कर रहे हो, when you are trying to quantify it, then you have to see whether that law is in terms of pain or pleasure applying to how many people. How many people get affected by pleasure and how many people get affected by the pain, that factor must also be kept in mind. एक और भी है remoteness. अगर आपको नजर आ रहा है, remote का लफ्ज आता ही होगा. Remoteness means how soon the impacts will be on the people. Remoteness, टाइम ड्यूरेशन में, यानी टाइम ड्यूरेशन से मतलब है कि कितनी जल्दी या कितनी देर से इंपैक्ट आएगा. मिसाल के तौर पर एक आप पेन क्रिएट का एक लॉ बना रहे हैं, दैट विल टेक इंपैक्ट. हम कहते हैं जी आपको फायदा नहीं होगा, आपकी अगली नस्ल को जाके फायदा होगा. जैसे ट्री प्लांटेशन है, आप कहते हैं जी अगली नस्ल को फायदा. तो इसका मतलब है कि आपका इंपैक्ट तो आएगा, प्लेयर आएगा, बट इट विल हैपन आफ्टर सच बैड टाइम. लॉन्ग डिस्टेंस में जाएगा, लॉन्ग टर्म में फायदा होगा, शॉर्ट टर्म में नहीं होता. विल पीपल लाइक दैट? नो, obviously not. So the remoteness, how quickly that impact will be on the people, that factor should also be kept in mind. ये कोई 5-6 factors हैं जी. These factors need to be used to measure and quantify pleasure or pain, and इसी की बुनियाद पे फिर आप जो parliaments हैं, they should make laws. Last sentence. Bentham says that ये जो quantification है, this quantification of pain and pleasure, this is what he calls, वो term use करता है, उसको कहता है the hedonic or philosophic calculus. ये term मैं यहां पे लिख रहा हूं, philosophic calculus. Yes, जी ये गुलपन्ना अगर आप प्लीज इसको पब्लिक कर दें. आमना मैं अपने पॉइंट पे आ रहा हूं, गुलपन्ना इसको पब्लिक कर दें. philosophic calculus कहते हैं जी इसको. This is what we call the philosophic calculus, जिसमें आप कैलकुलेशन कर रहे होते हैं. थैंक यू गुलपन्ना. So ये बेसिकली उसका फार्मूला है जी. दिस इज व्हाट ही कॉल्स इट. जी हमने आप ठीक कह रही हैं. देयर आर अदर, ये 4 फैक्टर, मैं कितने लिखवाएं, 1 2 3 4 5 नहीं है जी, टोटल हैं 3 6 या 7 फैक्टर्स इन टोटल. उसमें और भी प्योरिटी भी है, फेकंडिटी भी है, वो फैक्टर भी है, बट यू कैन ऐड ऑन दैट. बट ये मेन फैक्टर्स हैं दैट आर नीडेड. ये सारी थ्योरी कहलाती है उसकी. दिस ऑल थ्योरी इज कॉल्ड द theory of utilitarianism. This all theory is called the theory of pain and pleasure. और obviously अगर आप ये factors को देखें, उसी से हो जाता है greatest happiness of the greatest numbers वाला point भी है. So this is all about the theory. Now we have almost 50 minutes. So I would like to take 30 minutes questions, and then I can go on for the next 20 minutes for next topic जी. But let me first conclude. 1-2 मिनट मुझे दीजिएगा, मैं कंक्लूड कर लूं और इसके मॉडर्न दौर से रेलेवेंस बता दूं. जस्ट 1-2 मिनट दीजिएगा, अभी सवाल पे ना आइएगा प्लीज. बेंथम्स थ्योरी को मैं अगर कंक्लूड करूं, बेंथम्स थ्योरी ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म, बेंथम्स थ्योरी ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म is having a profound impact on, it has a profound impact on the later ideas related to legal-political debates. I repeat this point.
The Bentham's theory of utilitarianism has a greater impact, a significant impact on the later Lego-political debates. His theory is the foundation of later Lego-political debates. His theory laid the foundation of the modern jurisprudence, modern क्या कहते हैं उसको, लीगल कोड कह लें, jurisprudence कह लें. However, Bentham's theory also revolutionized the working of legislatures. It has revolutionized the working of legislatures, particularly in Europe and America. This is the broad idea जी. और अगर आप देखें तो मैं इसका जो कंक्लूजन है वो भी उसके इम्पैक्ट से रिलेट कर रहा हूँ, उसके इम्पैक्ट क्या हैं. तो बेंथम की थ्योरी ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म जो खासकर लॉ के हवाले से है, इसका इम्पैक्ट मॉडर्न लॉ में फॉलो किया जाता है. हिज थ्योरी ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म इज फॉलोड इन द मॉडर्न. देखिए, अगर आपसे पूछूं व्हाट इज डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी, इज इट नॉट ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म? डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी क्या है? इज इट नॉट यूटिलिटेरियनिज्म? इट इज एक्चुअली सॉर्ट ऑफ कि जी हालात ऐसे हो गए थे कि मजबूरी हो गई थी मार्शल लॉ लगाना, सॉर्ट ऑफ. सो और वैसे बाय द वे हमारे मुल्क में डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी गलत समझी जाती है. डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी की जो हेंस केल्सन की थ्योरी है, दैट्स अ थ्योरी इन लॉ एंड यू कांट एस्केप फ्रॉम. हाँ, मार्शल लॉ में अप्लाई करना तुक नहीं बनती, बट लॉ ऑफ नेसेसिटी इज ऑलवेज देयर. इट्स अ बेसिक लॉ, ये तो एग्जिस्ट करता है. सो बेंथम की जो थ्योरी है दैट हैज it has a profound impact on the working of the modern legislatures. Or this principle of utility is applied by judiciary, this is applied by the courts, this is applied by the legislatures, this is applied by the executive. So this is something that is applied even in modern times. हमारे यहाँ मॉडर्न दौर में अगर आप मिसाल ले लें, ऑर्डिनेंस आते हैं वो ज़रूरत के तहत आते हैं, because they are necessary as such. So sometimes states make policies on the basis of what is necessary and not on the basis of what is the source of it. अच्छा, सिमिलरली उसकी जो थ्योरी ऑफ पेन एंड प्लेयर है, दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ थ्योरी जिसको कहते हैं मॉडर्न दौर की डेमोक्रेसी से कंफर्म करती है. सो इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज द पीपल्स इंटरेस्ट आर पैरामाउंट एंड देयरफॉर his theory is very much valid in present days time as well, because people centric है. लोग क्या चाहते हैं? The state, the legislatures are only chained by the people's interest and nothing more. फिर उसके बारे में कहते हैं हिज कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन नेचर, दैट इज आल्सो वेरी मच वैलिड जी. इट्स अ बेसिक आइडिया दैट पीपल लाइक टू अवॉइड पेन्स एंड पीपल लाइक टू गो फॉर प्लेयर्स. दिस अ बेसिक ह्यूमन इंस्टिंक्ट दैट इज एक्यूरेटली एक्सप्लेन्ड बाय जेरेमी बेंथम टू. वो भी उसका एक कंट्रीब्यूशन में आ जाता है. और लास्टली उसका जो मेन कंट्रीब्यूशन में हम बात करते हैं तो उसकी जो थ्योरी है यूटिलिटेरियनिज्म की, दैट आल्सो has an impact on the other fields, जैसे इकोनॉमिक्स है, जैसे सोशियोलॉजी है, तो उसके अंदर भी पॉलिटिकल साइंस में कंट्रीब्यूशन तो नहीं होगा, लेकिन बाकी जो रिलेटेड फील्ड हैं सोशल बिहेवियर्स की या बिहेवियरल साइंसेस की, उनके ऊपर भी इसकी थ्योरी का एक इम्पैक्ट मौजूद है. सो दिस इज ऑल अबाउट इट. क्रिटिसिज्म के 2-3 पॉइंट लोगों ने उठाए हैं जी. क्रिटिसिज्म को आप प्लीज पढ़ लीजिएगा. हाँ, साइकोलॉजिकली, लेकिन क्रिटिसिज्म के पॉइंट में उठाऊं एक तो जो उसने कैलकुलेशन की बात की है, जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन की बात की है. सो वी थिंक दैट द मेजरिंग पेन एंड प्लेयर क्वांटिफिकेशन करना कैन बी सब्जेक्टिव. वो एक अंदाजा तो हो सकता है, बट दैट क्वांटिफिकेशन माइट नॉट बी ट्रूली इफेक्टिव. मैं एक मिसाल देता हूँ छोटी सी. व्हाट इज प्लेयर टुडे माइट बी पेन टुमारो. It might seem apparently that it's a player, but ultimately people may realize later on that it's a pain for them. So ये एक मुश्किल हो जाता है. तो जो पेन और प्लेयर की थ्योरी है, आई थिंक दैट्स अ सब्जेक्टिव थिंग और इट कांट बी क्वांटिफाइड एज सच. एग्जैक्टली शाहनज़र, मेजर करना इम्पॉसिबल अगर नहीं है तो मुश्किल जरूर हो जाता है. दूसरी चीज, दूसरा पॉइंट, देयर आर लॉट्स ऑफ वेज इन विच
people might not be actually aware of their true happiness. Sometimes लोगों को अपनी true happiness का नहीं पता होता. They don't realize what is good for them and what is bad for them. And sometimes state has to take unpopular decisions, and those unpopular decisions in the longer run prove to be beneficial for the states. Unpopular decisions too sometimes are taken by the states for the broader benefits of its people. ये भी एक फैक्टर है जिसको हम इसके पॉइंट पे क्रिटिसिज्म कर लेते हैं. एंड लास्टली इसी पॉइंट को मैं अगर दूसरे लफ्ज में यूज कर रहा हूं, जो बैंथम की पेन्स और प्लेजर्स हैं, उस लिस्ट को जब आप पढ़ेंगे, कुछ मैंने बताए हैं, दोज दैट लिस्ट ऑफ पेन्स एंड प्लेजर्स आर अगेन लिमिटेड, वन, एंड सेकेंडली दे आर वेग. उनको इंटरप्रिटेशन उनकी डिफरेंट तरीके से की जा सकती है. मेमोरी का लफ्ज है, इमेजिनेशन का लफ्ज है, उसके अंदर नॉलेज का लफ्ज है, वेल्थ का लफ्ज है. सो ही प्रोवाइड्स दोज पेन्स एंड प्लेजर्स दैट आर नियर टू इम्पॉसिबल टू मेजर, और मोस्टली जो है वो वेग होते हैं. यस, ये दैट्स टू. एक आप वाला पॉइंट जो आपने पहले उठाया था, यू कैन ऑल्सो एड दिस पॉइंट जी. हाउ डिड ही नो दैट द इम्पैक्ट ऑफ लॉ विदाउट पायलट प्रोजेक्ट एक्सरसाइज, यानी आप उसको कहते हैं स्नैप कैसे लेंगे कि लोगों का क्या ओपिनियन है, लोगों को क्या पेन और प्लेजर्स हैं. हाउ वुड ही नो द पेन्स एंड प्लेजर्स विदाउट एक्चुअली टेकिंग इनपुट फ्रॉम द पीपल. उसने कुछ सर्वे नहीं करवाया, उसने कुछ लोगों से ओपिनियन नहीं लिया. सो ही अज्यूम्ड द हैप्पीनेस एंड द पेन्स विदाउट एक्चुअली आस्किंग द पीपल फॉर दैट. True. Arwa, exactly, that's again point of criticism. एकरा जब क्वालिटेटिव होता है, फिर मैयर का लफ्ज नहीं आता. You can't measure qualitatively. I'm open to questions जी. Let's take 30 minutes questions.